So, namaskar all of you. हमने आज section wise Indian Evidence Act, not exactly Indian Evidence Act, but both the evidence laws. माने Indian Evidence Act भी concept wise पढ़िबा और सेही concept टा कोठी हमर भारतीय साक्ष्य अधिनियम रे अछि ताको भी पढ़िबा. So basically हमें जो ई कोर्स टा में एटा एविडेंस एक्ट रो कोर्स नो एटा एविडेंस लॉ रो कोर्स. ओके तो एविडेंस लॉ भितरे हमर पुराना जोटा एविडेंस एक्ट थिला सेटा भी हमें पढ़िबा और एबे जोटा भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेटा भी हमें पढ़िबा. सो दिस विल बी ए कंपैरेटिव कोर्स. ठीक अछि तो तेणु गोटे कंपैरेटिव कोर्स हिसाब रे हमें को पढ़िबा. सो नाउ जदि हमें देखिबा बिफोर स्टार्टिंग, ठीक अछि, बिफोर स्टार्टिंग ये जो एविडेंस हमें कहूछु, ओके, एविडेंस हमें कहूछु. So you tell me, what do you mean by actually evidence? Evidence रो concept टा कौन? Okay, what do you mean by evidence? Okay, तो evidence रो अर्थ कौन? The word टा, okay, that is evidence. What do you mean by evidence? हमें टिके देखिबा evidence रो characteristics कौन? Okay, आउ सेही पर्टिकुलर वर्ड टा हमर कोठु कोन आसीची. ओके, बुझ पारले तो बेसिक जिंस गुडा हमें सेउ थ्रू स्टार्ट करे. व्हाट यू मीन बाय एविडेंस? ओके, व्हाट यू मीन बाय एविडेंस? सो दोस थिंग्स वी विल स्टडी. जनरली मु आपन को पचारिबी एविडेंस कोन? व्हाट विल यू से? व्हाट यू मीन बाय एविडेंस? यदि मु से पचारिबी व्हाट यू what do you mean by evidence? Generally speaking, what is evidence? Okay, what is evidence? तो आपण कहबे जो हमें साथी हरिका दउचू ताको आपण एविडेंस कहि परिबे. ओके, सो सेमती बहुत जण तार आंसर दे परिबे, राइट. के जण एमती कहि परिबे कि एविडेंस हरिका, ओके, by evidence we mean something which will prove our point in court. General जिनसटा कहूछ. ओके, तो यही सब जिनस नॉर्मली आपण आंसर देबे. कि कहबो कि टेस्टिमोनी हैला एविडेंस. ओके, सो एमती बहुत प्रकार रो आपण आंसर्स दे परिबे. जेतरे मु पचारची आपण को आपण को पई एविडेंस रो मानेटा कोन. जेतेबेले हम देखिबा एक्चुअली, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एविडेंस? तार दीटा जिनस हम कर परिबा. कोन ना फर्स्ट तो हैला एकेडमिक डेफिनेशंस रो. ओके, एकेडमिक डेफिनेशंस कोन? जो गुडा जूरिस्ट माने आपण को देछन. ओके, सो सेटा हैला एकेडमिक डेफिनेशंस. हमरा बेसिक जिनसटा हमें जानिलु कि एविडेंस आपण को किछि गोटे जिनस को प्रूफ करिया पई, ओके, आपण ताको यूज करूछन, राइट. सो टेक डाउन एविडेंस. Just a minute, I'll just put it here so that it becomes easy for you.
ओके तो फर्स्ट लिखंतु general definition of evidence. General definition of evidence. General definition of evidence. Okay. So लिखंतु then. अब reference में मु whiteboard रे दे दोची. You can write it. In legal terms, evidence refers to any material items or assertions of fact that may be submitted to a competent tribunal as a means of ascertaining the truth of any alleged matter of fact under investigation. है ना? तो आपण लिखंतु मु तार मीनिंग ता कहूची से हिसाब. ओके जस्ट राइट इट डाउन. आकु कोन कोनती वर्किंग डेफिनेशन कोनती. वर्किंग डेफिनेशन रो अर्थ कोन ना एई डेफिनेशन उडा आपणकर these are not academic definition. जनरल लोकटे जेंति बुझी परिबो सेही टाइप रो डेफिनेशन एटा फंक्शनल किंबा वर्किंग डेफिनेशन को. ठीक अछि तने एनीथिंग कोनोसी जिंस आपण कोनोसी फिजिकल जिंस आपण दउचंती कोनोसी असर्शन आपण करचंती. ओके ताले ये सब गुडा आपण को एविडेंस अंडर रे जिवो. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस. ओके दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस. बुझी परले. नाउ जेहेतु आमे गोटे डिटेल तार नोट्स आमे करिवा तो एठी गोटे आपण को माइंड रे रखिवार अछि कि एकेडमिक डेफिनेशन उडा आपण मने न रखि पारंती परीक्षा पई किंतु एटलीस्ट आपण जानि थिबा दरकार. यू शुड नो. ठीक अछि यू शुड नो दैट राइट. सो ए जो वर्ड ता हमें कहबा एटा कोठु आसी तार दीटा जनरली गोटे तो हैला कि एविडेरा से वर्ड रू आसी एविडेंस ता किंबा एविडेंशिया रू भी आसी. ओके तो नेक्स्ट पॉइंट लिखंतु etymology of the word evidence. Etymology कोन रूट तार हला कोठु आसी से वर्ड ता कोठु आसी आपन. Etymology of the word evidence. Okay लिखंतु सेटा. The term evidence originates from the Latin word evidentia. Okay meaning clearness or proof. Meaning clearness or proof. Meaning clearness or proof. Okay it is derived from evidence which combines x means out of and videra मु जोडा कहतली. ओके एविडेरा जोडा हम कहउछु. सो एविडेरा टा को भागिले x आउट ऑफ आउ विडेरा टू सी. तो एविडेरा रु सेटा आछि एविडेंशिया ताको आपण भी कहउछथि. ओके collectively signifying something that is clearly seen or obvious. ठीक अछि एमिति देखिया गले हमर बहुत गुडे ओके आसी जीवो कोन definitions by great personalities. So ता भितरु किछिटा आमे नै परिबा. राइट. सो जेते हमर डेफिनेशंस अछि ता भितरे विगमोर करो डेफिनेशन ता गोटे हम जनरली कोट करू. ओके तो सी कोन डेफिनेशन देचंती लिखंतु. आफ्टर द क्लास जेतोले वीडियो टा अपलोड होबो आपन को ऐप रे सेतबेले मु एई पीडीएफ टा भी अपलोड कर देबी. तन जदि आपन किछि मिस करि जाउचंती ओके मु तो स्लो रे डाकुची बट स्टिल देन आपन किछि मिस कर जाउचंती तो सेटू देखि दे परिबे. ए प्रोमिनेंट लीगल स्कॉलर विगमोर डिफाइंड एविडेंस एज एनी नोएबल फैक्ट. नोएबल माने जोटा आपन जानि परिबे और ग्रुप ऑफ फैक्ट्स not a legal or logical principle. तेणु गोटे लीगल कि लॉजिकल डॉक्ट्रिन कि प्रिंसिपल ताको आपण एविडेंस हिसाब रे कहि परिबे. ओके कंसीडर्ड विथ अ व्यू टू इट्स बीइंग ऑफर्ड बिफोर a legal tribunal for the purpose of proving or disproving a matter under inquiry. कोर्ट जो विषय रे एडजुडिकेट करचंती तारी ऊपर एटा. ओके
ताको प्रूफ करिवो किंबा डिस्प्रूफ करिवो बुझि पड़छन सो दिस इज द ओके पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विगमोर सेमिति बाउ बहुत लोक अछंदी बट देन गोटे ही डेफिनेशन सफिशिएंट जदि आपण जुडिशियल सर्विस पई प्रिपेयर करछंदी ताले एते दरकार नाही ओके खाली वर्किंग डेफिनेशन ता जानिले सफिशिएंट हबो ठीक अछि अदरवाइज यू नीड टू नो जदि धरन आपण सेमेस्टर रे लिखिबे ओके ताले एनीवन आपण लिखि दे परिबे सेटा ओके एकेडमिक डेफिनेशन तापरे नेक्स्ट you come to it as well all of you have written this part first जोटा लिखिले definition of evidence this is called working definition की general definition तापरे आसिला से evidence word ता कोठु आसिला etymology of word evidence आउ तापरे हमें लिखिलु कि evidence रो गोटे academic definition को गोटे jurist की scholar के देथे हैला सेटा खाली परीक्षा रे लिखिया पे जा दरकार अदरवाइज बुझिया पे ए जो वर्किंग डेफिनेशन ता प्रथम रे अपन लिखचंती सेटा दरकार ओके अच्छा ये जो एविडेंस लॉ हमें कहूछु ठीक अछि एविडेंस लॉ सो ए एविडेंस लॉ आपनकर बेसिकली स्पीकिंग ओके व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एविडेंस लॉ ओके व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एविडेंस लॉ ठीक अछि किबा आपण कहि परिबे फीचर्स ऑफ एविडेंस लॉ सेमिति आपण कहि परिबे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एविडेंस लॉ ठीक अछि कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एविडेंस लॉ तो सेटा में देखिबे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ एविडेंस लॉ सो फर्स्ट लिखंदु इट इज लेक्स फॉराई जोटा कि हमें ऑलरेडी डिस्कस करि छथि मतलब कहि परियो सेटा कोन व्हाट यू मीन बाय लेक्स फॉराई लेक्स फॉराई ओके माने कोन that can anyone tell me means basically जोटा मैं देखथुलु it is the law of the forum माने जो देश रे कि जो जगह रे आपण जो लॉ टा इंप्लीमेंट करिवे सेही जगह लॉ टा इंप्लीमेंट होबो ओके इंडिया रे जदी गोटे केस टे चलीबो सेथरे ऑब्वियसली इंडियन लॉ इंप्लीमेंट होबो बुझि परले सो दैट इज बेसिकली लेक्स फॉराई और लॉ ऑफ द फोरम सेटा पॉइंट 1 रे देखन राइट जस्ट राइट अकॉर्डिंग लेक्स फॉराई और लॉ ऑफ द फोरम so point 1 that is lex fori एटा पॉइंट 1 रे लेखन एटा हला फीचर्स सब ठीक अछि फीचर्स ऑफ एविडेंस लॉस
The law of evidence is governed by lex fori, which means it follows the law of jurisdiction where the court is located. Okay. तामने धरंतु आपनकर इंडिया रे केस टा ट्राई हबो तेनो एटी इंडियन लॉ एप्लीकेबल हबो यूएस रे केस टा ट्राई हबो सेटी यूएस लॉ अप्लाई हबो ओके सो एग्जांपल देछि if a case is heard in India the Indian Evidence Act और एबे भारतीय साक्ष्य अधिनियम that will apply even if events have occurred outside India suppose श्रीलंका रे गोटे मर्डर हिच किंतु केस टा ट्राई होछि इंडिया रे ताले भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदिका डेट रे अप्लाई हबो ओके आमे तो श्रीलंकन लॉ टा अप्लाई करिबुन ना हम देश रे तांको देश रे जदी ट्रायल हेता सेठी श्रीलंकन लॉ अप्लाई हेता बुझि परछन तो एटा हला पॉइंट नंबर 1 दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक और जहां भी आपण कोंतु फीचर एटा हला फर्स्ट ठीक अछि तापरे सेकंड असंतु व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी लॉ ऑफ एविडेंस तो सेथरे हला आपनकर एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस एविडेंस जोटा आपण कोर्ट को देबे कोर्ट सब जिंस एक्सेप्ट करि जिवे किंबा टेक्निकल टर्म रे कहले एडमिट करिवे बोली किछि माने नाही ठीक अछि तेनु हमें आगु देखिबा दीटा बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट गोटे हला रेलेवेंसी आ गोटे हला एडमिसिबिलिटी रेलेवेंसी माने कोन सेटा रेलेवेंट कि नाही केस को केते गोटे जगह में देखिबा सेटा रेलेवेंट थिबो केस को तथापि कोर्ट ताको एडमिट करिवे नाही ठीक अछि काहे ना सेमिति ओके किछिटा एक्सेप्शनल सिचुएशंस दिया हिच ओके तो रेलेवेंस एंड मटेरियलिटी को एविडेंस को कोर्ट एक्सेप्ट करिवे ओनली एविडेंस दैट इज बोथ रेलेवेंट एंड मटेरियल टू द डिस्प्यूट ओके मटेरियल टू द डिस्प्यूट माने एक्चुअली जो विषय रे केसटा चली छि ता सहित सेटा कनेक्टेड थिबा दरकार ओके तेनु कोर्ट से गुडा एडमिट करि परिबे एक्सक्लूजनरी रूल्स केते प्रकार रो एविडेंस अछि जोडा कि आपण ग्रहण करि परिबेन कोर्ट ताको ग्रहण करिबेन जेमते कि हियर से एविडेंस हमें देखिबा टाइप्स ऑफ एविडेंस रे केते प्रकार ऑलरेडी हमें देखि छु सेटा टाइप्स ऑफ एविडेंस तो हियर से एविडेंस कोन मन पकांतु हियर से एविडेंस माने हला कि जोडा मु निज सेंस सुनी थियो बस आपण सुनी चंती गोटे लोकटू कि कोठू गोटे आपण सुनी चंती कि निजर सेंस रे परसीव करिना ना निज आखिरे देखचंती ना निज कान रे सुनी चंती ना निज नोज रु आपण स्मेल करिचंती ना निज स्किन रु आपण फील करचंती कि गोटे कोन कहला ठीक अछि से रूम रे बहुत गरम होतला राइट मु सुनिली ता कथाटा बट मु से रूम रे पसिनी कि मो स्किन को गरम फील हेनी ओके ताकू कोनती हियर से एविडेंस तेनु जनरल लॉ टा हला हियर से एविडेंस केबे भी एविडेंस हबन बुझि पाले तो किंतु केतरा जगह रे हियर से एविडेंस को भी हमें एविडेंस हिसाब रे नौ जेतरा पढिबा कांसेप्ट ऑफ हियर से एविडेंस सेतबेला आउ डिटेल्स रे पढिबा बुझि पाले जेमति कि किछरा एग्जांपल मु देई परिबी हियर से एविडेंस रो डाइंग डिक्लेरेशन गोटे लोकटे माने मरिया ऊपर अछि से भाबुजी कि से मर जिवो से गोटे तार गोटे डिक्लेरेशन दउछ गोटे स्टेटमेंट दउछ कि मो संगे ये या गतरा से गतरा सेते मु बे मरिया पे जाउछ ठीक अछि एबे सी जहा कहूची सेटा मे भी जदि के देखिचन तो भलो कथा केही भी देखि नांती ताले तथापि कोर्ट ताकू वेटेज दबो डाइंग डिक्लेरेशन ओके काहे ना जनरली एटा में कंसीडर करछु कि लोकटा तले लास्ट स्टेज रे अछि से आउ निजे मिछ कहि कि ठाकुर को पाखो जीवा पे तो केबे भी से चाहबा बुझि परछन सो सेटा हला आपनकर एक्सेप्शन ओके टू हियर से गोटे कहली तापर रेस जेस्टा जोटा में ओके पढुतलु ये रे बीएसए क्लासेस रे सेटा भी किंबा प्रिविलेज कम्युनिकेशन लेट्स से गोटे वकील अछंती आउ ताको क्लाइंट जे सी एक्चुअली गोटे मर्डर करछ सी आसी कि ताको भाई कन्फेस करछ मु मर्डर करछ मते रक्षा करम ठीक अछि सो एबे कोन हबो ना वकील जाई कि एबे सेटा कोर्ट रे विटनेस हिसाब रे कहि परिबनी ये मो पाखो आस्तले केस नै कि कहले कि मु मर्डर करछि रेप करछि जाबी करछि हला कोर्ट सेटा मानिबेन हां किंतु सेटा आगु पढिबा जदी से किछि भूल काम ताऊ करिया पे कहबे भूल काम इन द सेंस कि फॉर्जरी कर ठीक अछि एटा डॉक्यूमेंट अछि डॉक्यूमेंट आगे आपण चेंज कर देबे
आउ जमती कि जना पड़ो कि मो कामटा हो कोर्ट मत खलास करदे ठीक अच्छे एगुड़ा जदि से एडवोकेट को कहते ताहले एडवोकेट जाकि कहींपर कि ये मत एमती भूल इलिगल काम करने कहते हम ना जड़े क्लाएंट जदि आसिकी कहूँ एडवोकेट को मुझे जिनसा एक्चुअली क्राइम टा कमिट करी ओके से कॉन्फिडेंस रे कहूँ तेणु कोर्ट से साक्षी हिसाब से एक्सेप्ट करेंगे ना बुझिपारे तापर सेमती आउरी भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन अच्छे तो हजबैंड वाइफ भितर किसी जिन अच्छे जोड़ा कि कोर्ट एक्सेप्ट करेंगे तो युवा आम से टाइम देखा ओके तो यही जो एक्सक्लूजनरी रूल्स हिसाब से केतेटा आपन प्रिविलेज कम्युनिकेशन आउ भी केतेटा जिन धरतु सिक्रेट्स ऑफ द स्टेट मु आगु गुइंदा विभाग में काम करी धरतु ओके रिटायरमेंट पर गोटे को केस गोटे आसला सेठी मते कोर्ट रे पचरा होची आर प्लान ऑफ एक्शन कौन थिला एटा टॉप सिक्रेट जिंस आर प्लान ऑफ एक्शन कौन थिला कोर्ट सेठी मना करे ना एटा दरकार नहीं ठीक अच्छे आम बहुत गुड़े सेमती अच्छी ऑफिशियल सिक्रेट्स एक्ट अच्छी सो एनी सिक्रेट ऑफ द स्टेट जोटा कि बाहर को आसिले देश को किसी हार्म हम सेटा भी कोर्ट ताको एक्सेप्ट करी हैला तो एटा हैला पॉइंट नंबर 2 फीचर नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 admissibility of evidence and so there are certain types of evidence which will not be admitted which cannot be admitted हैला आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट जोटा हमें बीएसए क्लासेस रे जस्ट सारिलु सेटा हैला बर्डन ऑफ प्रूफ ओके एंड ओनर्स ऑफ प्रूफ ए दुटा कांसेप्ट पूरा डिटेल से हमें जिबा जतरा में कांसेप्ट को जिबा बट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एविडेंस लॉ हैला बर्डन ऑफ प्रूफ ओके और बर्डन ऑफ प्रूफ और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कौन बर्डन ऑफ प्रूफ हैला को पार्टी ऊपर ओके रेस्पॉन्सिबिलिटी टा अच्छी कि से गोटे केस रे एई फैक्ट टा प्रूफ करिवो ठीक अछि तो आउ जनरल रूल टा कोन जे गोटे जिंस क्लेम करूछ सेही प्रूफ करिवो मु गोटे जिंस क्लेम करूछ ये एमती करछ ताले मते प्रूफ करे पड़ ना मु कहूची ये एमती करछ से तो निजे कहूनी राइट तेणु जिते बड़े जड़े किसी गोटे क्लेम करुची असर्ट करुची कि ये एमती करचंती एमिति हेची जा भी सीए प्रूफ करिवो कि सेटा हेची एटा जनरल रूल बट देयर आर एक्सेप्शंस टू द रूल आल्सो जेंति कि पॉक्सो एक्ट रे थाए पॉक्सो एक्ट रे नॉर्मली आपण देखंतु क्रिमिनल केस रे मो ऊपर प्रोसिक्यूशन कहूची कि ये चोरी करछन राइट मते प्रूफ करिवर नै मु चोरी करनी प्रोसिक्यूशन प्रूफ करिवो कि मु चोरी करछि बर्डन ऑफ प्रूफ टा तांको ऊपर अछि मो ऊपर नै किंतु केते गुडे केस अछि जेंति कि पॉक्सो केस अछि ओके जोटी कि छोट पिलांको अगेंस्ट रे ओके सेक्सुअल ऑफेंसेस हो सेठी कोन बर्डन ऑफ प्रूफ टा रहउची ओके जे अक्यूज ता ऊपर ताकू प्रूफ करे पड़िबो मु एटा करिनी बुझि पारले तो सेगुडा एक्सेप्शन एमिति आउरी भी केते एक्सेप्शंस आपनकर अछि तो सेटा हैला बर्डन ऑफ प्रूफ ताले स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कोन ना एति की मिनिमम लेवल ता ऊपर को जदि आपण प्रूफ देबे ताले आपण केस टी जीति परिबे सीधा भाषा रे क्रिमिनल केस रे ताको हमें कहउछु बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जने मर्डर करछ केमिति प्रूफ हो तो कोर्ट तार किछटा मिनिमम स्टैंडर्ड रखछ सेति की स्टैंडर्ड जदि आपणकर प्रूफ ता ऊपर को हे जाउची ता माने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ हे गला कि ये मर्डर करछ ओके किंतु जदि सेति की एविडेंस नाही ओके ताले ताको ही विल बी acquitted due to lack of evidence सेटा हैला स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ आउ सिविल केस रे एटा बहुत किटा मतर पचर भी हेची ओजेएस इंटरव्यू रे प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज ओके जो प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस लिखिची सिविल मैटर रे था प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज से टिके ता लेवल टा टिके कम जदि सिविल मैटर रे ओके सेति की प्रूफ दे देले हे गला ए जमीटा नारे अछि टाइटल प्रूफ हे गला किंतु मर्डर प्रूफ करिया पे रेप प्रूफ करिया पे थेफ्ट प्रूफ करिया पे एनी क्रिमिनल एक्टिविटी प्रूफ करिया पे आपन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ओके सेही लेवल रो प्रूफ द पड़ियो सो दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हम नॉर्मली कोन कहू जोन जो टॉपर होचंती क्लास 1 2 रो जो माने ए पिला रो स्टैंडर्ड ता भलो ठीक है तो केते गुडे स्कूल आजिकल तो एते पिला हेलेनी एते सेक्शन हेलेनी से सब सेक्शन भी कर दोते एमितिया
एबीसीडी जे टॉप पिला थे से सी सेक्शन रे रहबे बाकी पिला मिसे कि हमें बाकी तीनटा सेक्शन रे रखियो एग्जैक्टली मतलब कोन स्टैंडर्ड हिसाब रे देखि कि तांको से माने डिवाइड करले तो एठी भी प्रूफ रो स्टैंडर्ड ता केते प्रूफ रो ओके आपण कहि परिबे रिलायबिलिटी ता केते क्रिमिनल केस रे जदी रीजनेबल बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपण प्रूफ कर दोछन देन यू विन इन द सेंस दैट विन माने कोन आपण को फेवर रे ओके जजमेंट जिबारो बहुत और वर्डिक्ट जिबारो बहुत संभावना अछि बुझि परले तो एटा हला पॉइंट नंबर 3 ओके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस एटी लॉ ऑफ एविडेंस माने बोथ इंडियन एविडेंस एक्ट को कहूछु आ भारतीय साक्ष्य अधिनियम को कहूछु तो एही कोर्स रे हमें दीटा जाको पढिबा कंपेयर करके पढिबा हमें कांसेप्ट पढिबा सेही कांसेप्ट ता इंडियन एविडेंस एक्ट रे किंतु रेस जेस्टा हमें पढिबा तो सेतरे हमें कहबा कि रेस जेस्टा कांसेप्ट तो फीचर्स सब बुझिलु इंडियन सर एविडेंस एक्ट में सेक्शन 6 रे थिला आउ एथरे सेक्शन 4 रे अछि हां कोन सर प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस टा आउटे बुझे देन प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज ता मु जाइनी सेठी की सेटा हला सिविल केस रे ओके आपण एति की बुझोतु खाली सिविल केस रे जदी आपण को गोटे इंसो प्रूफ करिवार अछि ओके सेही लेवल रे आपण प्रूफ कर देले प्राय आपण केस टा जीतिबे प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज ता अर्थ कोन तार सिंपल भाषा हला कोर्ट को एति की लागिबा कथा कि ये सिविल केस रे ये जो प्रूफ टा दउचंदी ये प्रायतः ठीक थिबो ये प्रायतः सत थिबो ए प्रायतः एई क्वेश्चन टा आंसर करि दउची दैट मींस द कोर्ट हैज टू हैव फेथ दैट द एविडेंस प्रेजेंटेड is more likely to be correct okay more likely to go in a particular direction ठीक है more likely माने टिके likely भी अछि कि सेटा न ही पारे किंतु क्रिमिनल केस रे जदी टिके भी likely अछि कि सेटा न ही पारे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हबन नहले टिके आपण गोटे भूल रे गोटे लोगो को ओके फांसी दंड दे देबे तापर किछु करि होबनी कि ताको 10 वर्ष जेल रे फसे देबे तार तो गला राइट टा पूरा पळेला सिविल केस में मैक्सिमम कोन हो से जमीटा तार नुह भूल रे ताको दिया ही गला तापर पुडी से आरो पार्टी जार जमी होती से जाई कि सेटा पुनी ठीक करे परिबो बुझि पले तो तेनो सिविल केस रे टिके लेवल टा कम थाए केते स्ट्रिक्टनेस रे आपण प्रूफ टा देखु से पे से कांसेप्ट हला प्रीपोंडरेंस माने कोन भाबीबा प्री माने आगुरु तेनु कोर्ट प्रूफ आसीबा आगुरु सेटा पॉन्डर करिवे प्री पॉन्डर करिवे कि आर प्रोबेबिलिटी मोर लाइकली टू बी करेक्ट और लेस लाइकली टू बी करेक्ट तो प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी रो मानेटा से कोर्ट को कोन लागु ओके सेटा तो प्रूव होबो तापर पुनी जहा भी आपण ताको केस रे करिवे बट कोर्ट को कोन लागु छि प्रथम प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज और प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस सिविल मैटर ओके तको टिके माने बहुत जनरलाइज करी कहूची ए प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्लियर हे जिवो जदी आपण 60% रखु जंदी आउ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्लियर होबो जदी आपण 95% रखु जंदी बुझ परले सेही हिसाब रे हमें ताको देखि पारि क्लियर है बुझी पारे प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस कौन किंबा तार टेक्निकल टर्म टा है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज है ना बुझले सो एटा आगे पॉइंट नंबर 1 2 3 तापर पॉइंट 4 को आसंतु बहुत थोड़े इंपोर्टेंट हमें जिनस देखिबा कि प्रिजम्पशंस ओके आउ इन्फरेंस presumptions and inferences so point 4 लिखंतु presumptions and inferences presume करिया माने कोन ना एक्चुअली हमें जाननु कोन जिंसटा हमें ताको भाबी की चलछु एटा ठीक बोल ओके so these are legal assumptions that remain
valid till disprove बहुत प्रकार प्रिजम्पशंस हमें देखिबा ओके सो सच एज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इन क्रिमिनल ट्रायल अर्थ कोन आपण जानछथि सबले कहबे कि क्रिमिनल ट्रायल रे अक्यूज्ड से पर्यंत इनोसेंट जो पर्यंत तार कन्विक्शन हेनी ओके सो ही इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट until he is convicted ठीक अछि जने मर्डर करछि ता ऊपर केस चलछि ए पर्यंत कोर्ट ताका फैसला दे नाथि ताले से लोकटा इनोसेंट हेबे अक्यूज्ड अछि जो दिन कन्विक्ट हबो कोर्ट तो कन्विक्ट कर दे हां ये मर्डर करछि ओके ताले से गिल्टी हे गला राइट तापर पुनी आगु को लीगल प्रोसेस अछि से जीवो हायर कोर्ट्स को जीवो से अलग कथा बुझि परले तो प्रिजम्पशन इन्फरेंसेस कोन जो एविडेंस दिया होछि से एविडेंस रु आपण को तथ्य उडा कोन डिसीजन उडा ड्रा करि पाबो हैला आपण को सीसीटीवी एविडेंस अछि फ्लाइट टिकट्स अछि कि अमुक दिन रे अक्यूज्ड से आउ गोटे देश रे थिला ठीक अछि तो एठी आपण जानले कि ऑब्वियसली ता माने से मर्डर सीन रे नथला इंडियन नथला लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रूव हे गला कि से सेही टाइम रे यूएस रे थिला obviously he cannot be at two places in the same time तो इंडिया रे तमान नथिला तमान से मर्डर करि पारि नथिबो बुझि पाले so these are logical conclusions evidence जा दोछि से थ्रू आपण लॉजिक यूज करके कंक्लूजन ता डिराइव करतो these are logical किंतु presumptions कोन these are basically legal assumptions तांकर legal ओके legs अछि ता माने तांकर legal validity अच्छी प्रिजम्पशन रो इन्फरेंस गुडा लॉजिकल ठीक अछि लॉजिक यूज करचंती आपण जनरल नॉलेज यूज करचंती सेथरु आपण लॉजिकल कंक्लूजन बाहर कर ओके एटा हला पॉइंट नंबर 4 नाउ यू कम टू पॉइंट नंबर 5 अच्छा जो साक्षी आपणकर आसिला हमें तो एविडेंस लॉ पढुछु ना जो साक्षी आपणकर ओके आसिला ताकू बाध्य करा ही परिबो कि जहाँ देखियो जहाँ भी हेले कहबो तार इच्छा नहीं कहया पे ही प्रिफर साइलेंस हम देखि छी बट मु कहया पे इंटरेस्टेड नो तो तार राइट अछि कि सेमती राइट टू साइलेंस अछि कि सेटा ओके ना जहाँ भी हेले तुम विटनेस हे कि आछो तुम जहाँ देखि तो सब सत कहया पड़ी ओके तेणु तापरे किए साक्षी दे परियो जे ना जे इच्छा सी साक्षी दे दो लेट्स से गोटे 5 वर्षर पिलाटे अछि कि देखि छी कोडे हिच अछि कहूची कि सेटा तार जा से कहूची ता टेस्टिमोनीटा सेटा कोर्ट एक्सेप्ट करिवे एते छोट पिलार 4 वर्ष 5 वर्ष हिच किंतु से क्लियरली बुझी पाउछ ताको एटे कोर्ट रे एडवोकेट क्वेश्चन पचाउछंती जज क्वेश्चन पचाउछंती बाबा सेदिन कोन हैला एला से सब कहूछ क्लियरली बुझी कि ठीक रे कहूछ बट से बहुत यंग अछि 4 वर्ष 5 वर्ष ताले ताकू से गोटे कॉम्पिटेंट विटनेस हबो कि टेक्निकल भाषा रे कहले किंबा कोर्ट से जहा कहूची कोर्ट ताकू किछि ओके वेटेज देबे कि से एविडेंस को से जहा कहूची ओके देबे छोट पिला हितले भी देबे एति कथा से जदी क्वेश्चन ता बुझी पाउची आ क्वेश्चन ता ठीक रे आंसर करि पाउ ओके तेणु दीटा जिनस आम ये देखिलु कॉम्पिटेंसी एंड कंपेलेबिलिटी ऑफ विटनेस पॉइंट नंबर 5 कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस माने कोन किए साक्षी दे परिबो it refers to whether a person is legally qualified to serve as a witness in court हैला जेमती मु कहली 5 वर्ष पिलाटा लीगली क्वालिफाइड तो आमर जनरल रूल हैला समस्त साक्षी दे पारि ठीक अछि समस्त साक्षी दे पारि ओके जनकर यदि किछि लीगल इनकैपेसिटी अछि से यू नो से प्रॉपर मेंटल हेल्थ रे नाही ताहेले भी कोर्ट जदि देखुचंदी कि से कथाटा बुझी पारुची किए कॉम्पिटेंट विटनेस हे परिबो तार बेसिक जिंस हला ताकू जदि सेही इवेंट ऊपर किछि बेसिक क्वेश्चंस पचरा हला नॉर्मल क्वेश्चंस पचरा हला से सेटा बुझी परिबो आउ ता हिसाब रे आंसर दे परिबो ताले से जत्ते छोट पिला हो जत्ते बुढ़ा लोक होंतु से
जहाँ आम कहूँ इनसेन अच्छी लोकटा सेमिति लोक भी थाउ इनसेनिटी अवश्य गोटे अलग टॉपिक आम से देखा कि जदि आप गोटे लोक को इनसेन लीगली इनसेन बोली आम प्रूफ कर पार्छु ताले जदि से किसी गोटे एक्शन करूची से समय रे तार लायबिलिटी प्राय बहुत कमी जीव कि रही ओके कोर्ट ताकू बहुत ही लिबराली इंटरप्रिट करती स्ट्रिक्टली नुह ओके कंपेलेबिलिटी माने कौन गोटे विटनेस जार कॉम्पिटेंस अच्छी साक्षी दबार ताकू बाध्य करें कि कोर्ट किसी जगह करें नॉर्मली ता इच्छा सी तो वॉलंटियरली आसिक दौर ना विटनेस ना तंटी चिपी किए आन कि तुम बाबा जदि यू नो एमती दबनी ताहले तुमको आम या करदेबू जदि स्टेट सेमती डरईकी आनी कौन दैट इज एविडेंस गिवन ऑन ओके इधर जदि प्रलोभन नहीं तुम्हें करदेला आम तुम चाकरी देदेबू ये पैसा देदेबू दैट इज इंड्यूसमेंट ओके आउ जदि डरई धमकी न कले आम अरेस्ट करदेबू तुम या करदेबू से करदेबू तुम के चाकरी मिलनी है डरई सेटा ठीक अच्छे किछिटा फोर्स पकई वॉलंटरी तो से विटनेस दे तेणु सेटा जो कोर्ट जानुंट कोर्ट से मान्य करेंगे से पुलिस सामने जो जहाँ भी आप कहते सेटा कोर्ट रे एक्सेप्ट करा जाए ठीक अच्छे पुलिस सामने गोटे स्टेटमेंट देले हाँ मुझे कर केसटा प्रूव हो गला से तार जीरो वैल्यू ओके एविडेंशियरी वैल्यू तार किसी ना हाँ सी आप जहाँ जहाँ कहे सतर जदि कहते पुलिस धरिकी आगू इन्वेस्टिगेशन कर आगू आउ प्रूफ बाहर कर ओके तो डिस्कवरी हो अदर जिनस आप जहाँ कहले से यूज कर आप हाँ मुझे मारदे सेटा को आप कोर्ट सामने पुलिस प्रेजेंट करें प्रेजेंट कले भी कोर्ट ताकू किसी एते सीरियसली नेबे ठीक अच्छे आम कन्फेशंस रे पढ़ा है एटा 5 नंबर कॉम्पिटेंसी एंड compellability of witness ठीक है किंतु there are cases where the court can compel a witness ठीक है साक्षी दवाई तुमको कंपेल करा जाई परिबो आउ सेटा हमने देखिजु आर्टिकल 20 रे भी कॉन्स्टिट्यूशन रो अछि कोन ना सेल्फ इंक्रिमिनेशन आपण बाध्य कर परिबेनी जण को कि तुमे निज अगेंस्ट रे साक्षी दियो ओके बट टिल देन सेल्फ इंक्रिमिनेशन केते बळे हबो तार सबु डिफरेंट रूल्स आउ कंडीशंस अछि केमति गोटे कॉमन जिंस हला जण को फिंगरप्रिंट दबा पई को आउची जण को वॉइस सैंपल दबा पई कोर्ट कहउचंती सी जाई कि हायर कोर्ट रे कहउची कि लोअर कोर्ट मते कहले वॉइस सैंपल दियो फिंगरप्रिंट दियो तो एटा हला ओके वायलेशन ऑफ माय फंडामेंटल राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन को वायलेट करूची ना एटा वायलेट करिवो तुमको कहउची तुम साक्षीटा दियो तुम रक्तटा मागुचंती तो से क्लियर हे तुम डीएनए एनालिसिस हे जो लोकर मर्डर हे ता पाखे रक्त मिलची ओके से रक्त तुम रक्त मैच हे गले सरला तुमको तो के कहूना कि एटा सेल्फ इंक्रिमिनेशन माने मु कहबी कि हां मु कर मते प्रेशर कराउची किंतु वॉइस सैंपलटा दे दियो तार हमें मैच करिवो सेटा सेल्फ इंक्रिमिनेशन हे परिबोनी ओके तो सुप्रीम कोर्ट एटा क्लियरली कहिछो व्हाट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड डज द कोर्ट हैव द पावर टू कंपेल ए विटनेस इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस यस कोर्ट करो से पावर अछि ठीक अछि तापरे नेक्स्ट 6 नंबर रे लिखंतु बहुत प्रकार रो एविडेंस हमें टाइप्स ऑफ एविडेंस रे देखिजु तो सेटा भी गोटे जिंस दैट इज डॉक्यूमेंटरी एंड रियल एविडेंस ओके तो डॉक्यूमेंटरी माने जो लेखा पेपर रे अछि आपनकर रिटन डॉक्यूमेंट ओके आ रियल एविडेंस माने एनीथिंग व्हिच इज फिजिकल इन नेचर जंती आपण मर्डर वेपन देले क्लॉथ्स देले एनी अदर आइटम व्हिच इज बेसिकली ताको टच करि परिबे टेंजिबल थिबो टेंजिबल माने कोन इंटेंजिबल माने कोन टेंजिबल हला आपनकर इट कैन बी टच्ड तार फिजिकल प्रेजेंस अछि आपण ताको छुई परिबे पेन को छुई परिबे टेंजिबल किंतु आपण गोटे लोक को बहुत भल पाउछ ताको टच करिवे इमोशन टा
ओके तो सेटा इंटेंजिबल एनी लॉजिक दैट इज इंटेंजिबल बुझी पारले व्हिच कैन नॉट बी टच्ड कि किए काहा को केते भल पाउची कि किए काहा ऊपर केते राग रखिची ताको छुई हबो सेटा ଗୋଟେ इमोशन टे ठीक अछि सो दीज आर इंस्पेक्टेड बाय द कोर्ट ए जो फिजिकल जिंस गुडा कोर्ट ताको देखिए मर्डर वेपन बंदूकटा देखिए पाखरु गोटे कौन मेक अच्छी का फिंगरप्रिंट अच्छी कौन एगुड़ा सब देखा ओके जन गोटे पत्थर जन को छेची छेची मार देछि से पत्थरटा दैट इज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट बुझी पारले तो ये हैला डॉक्यूमेंट्री आउ रियल एविडेंस तापरे आउ कोन केते गुडे जिंस अछि कोर्ट को आउ किछि प्रूफ दरकार नहीं कोर्ट से टाइप रो जिंस जदि आपण कोर्ट को दोचंती कोर्ट ऑटोमेटिकली जानी देबे कि हां एटा गोटे एविडेंस ता पई हम मागिबेनी कि हां एटा प्रूफ करो दैट इज कॉल्ड जुडिशियल नोटिस ओके तुरंत आपण सुप्रीम कोर्ट रो गोटे दोचंती हाई कोर्ट रे सुप्रीम कोर्ट रो गोटे ओके वर्डिक्ट दोचन जजमेंट दोचन सो एनी टाइप ऑफ जजमेंट एनी टाइप ऑफ कोर्ट ऑर्डर एनी टाइप ऑफ लेजिस्लेशन पार्लियामेंट गोटे एक्ट पास करछ सेटा आपण देखौछथि कोर्ट रे सब जुडिशियल नोटिस रे आसी ऑल दिस विल बी a part of judicial notice तो एटा हला पॉइंट नंबर 7 judicial notice allows a court to recognize certain facts as true without any formal proof ताको कहबेनी ये जो सुप्रीम कोर्ट रो आपण आनचंती जजमेंट आकु जाई कि यू नो आकु प्रूफ करंतु कि एटा सुप्रीम कोर्ट देछि सेगुडा से जिबे कि गोटे लॉ टे पास कराई एटा प्रूफ करंतु कि लॉ टा पास कराई पार्लियामेंट पास करछि कोर्ट विल नॉट गो इनटू दैट ओके मीडिया रिपोर्ट्स अमुक दिन रे गोटे बड़ ट्रेन एक्सीडेंट हेतिला ओके ये लोक जाउथिला पहुंचीबा पे बट से ट्रेन एक्सीडेंट जोकु आर इंजरी हे गला ये 15 दिन परे पहुंचला ठीक अछि एटा मीडिया रे बाहर थिला न्यूज़पेपर रे बाहर थिला तो सेटा जतले ऑब्वियसली जोटा कोर्ट को सामने रे अछि इजीली ताको वेरीफाई करी हे जीवो तो कोर्ट विल टेक नोटिस ऑफ दैट ताको कहबेनी तुम तुम टिकट दियो तुम तुम ये दियो से दियो ठीक अछि जदी ही हैज यू नो प्रूफ ऑफ दैट कि ए दिन एरे बड़ा एक्सीडेंट हेतिला हां टिकट मोर अछि तबन मु भी जाइथिली से ट्रेन रे ताको कहया पे पड़िबोनी कि कोर्ट ताको पछरेनी सतर गोटे एक्सीडेंट हेतिला एते बड़ ताको प्रूफ करो रेलवे रो गोटे चिठी आड़ आर आड़ दरकार नहीं सेटा मीडिया रिपोर्ट्स रे अछि न्यूज़पेपर रे अछि ओके ऑल दोस थिंग्स आर देयर तो जुडिशियल नोटिस हैला बुझिले सातटा जाक पॉइंट क्या लिखिचंती आउ थर थरे ताको देखंतु कोटा जदी बुझी पार नांती 2 मिनिट भाबंतु ता विषय सब गोटे एग्जांपल नै कि भाबे सुविधा हो आपण कांसेप्ट माइंड रे रहिजो घोषाघोषी करिया पड़िबो कांसेप्ट ऊपर फोकस करू तापरे जेतले सेकंड स्टेज को जिबे प्रिपरेशन करिवे पूरा प्रोजेक्ट करिका भाई सेते बळे टे घोषाघोषी करिया पड़िबो कोन ना सेक्शंस करिका रूल्स ऑर्डर्स करिका आर्टिकल्स करिका सेडा घोषिया पड़िबो एबे फंडामेंटल लेवल रे एतिक रे आपन को बुझी जिवार अछि जुडिशियल नोटिस माने कोन को सेक्शन रे अछि मन दरकार हैला कॉम्पिटेंसी कोन कंपेलेबिलिटी कोन कोर्ट कोन कंपेल करि परिबे गोटे विटनेस को कि तुम जहां भी हेले तुम साक्षी दबो केते जगह रे कंपेल कर परिबे आ कोन पई कंपेल कर परिबे किसबा एग्जांपल मु देली तुम वॉइस टा दियो सेटा मैच कराबो तुम रक्त दियो से मना करछु मोर मु टेस्ट करिवे डीएनए टेस्ट में रक्त देबी ठीक अछि यूएस करिका रे सेठी कोर्ट कंपेल कर परिबे ओके रक्त जहां भी हेले दियो एठी किंतु ओके डीएनए एनालिसिस पई से जदी दउनी तार ताको डर लागु रक्त देबा पे ताले स्पीड दे माने छेप दियो कि अलगा किछि जो तरह की स्वेट झाड़ा ओके स्वैब रे स्वेट टाकू एबो सेतरे एते भलो स्वेट रे कोन वेस्ट मटेरियल थाए ना तो डीएनए एते भलो बाहरिबो किंतु छेप रे बाहरिबो ठीक अछि तो कोर्ट सेटा कंपेल कर परिबे कि तुमे वॉइस सैंपल निहाती दबो तुमे बाध्य दबो सेटा फंडामेंटल राइट ओके राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन ताकू वायलेट करूनी तमे पढिबा विथ द केस लॉस जेतरे जिबा सेठी की ओके तरंत गोटे टेररिस्ट अछि कि गोटे थीव अछि नार्को एनालिसिस टेस्ट हबा ता ऊपर नार्को एनालिसिस जेंति कि तार रीजनेबिलिटी तार भाबिबार शक्तिटा पूरा जीरो हो जिवो
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ କରୁଛନ୍ତି ଭାବିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଡେ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବାର ଅଛି ଚୁପଚାପ ଯଦି ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ଭଲରେ କହିବେ ଯଦି ନ ଆସୁଛି ସିଧା କହିବେ ଆସୁନି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଭାବିବି ମୁଁ ଟିକେ ଗେସ୍ କରିବି ସେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କକୁ ଗେସ୍ କରେଇଦେବେ ତାପରେ ବୁଝିପାରିଲେ ପୁରା ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ କଣ ଏତେ ଭାବିଲେଣି ତାମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟିଭ ଆନ୍ସର ଦବ କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସତ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଦେଇଛି ହବି କୁକିଂ ଠିକ ଅଛି କଣ ଲେଖିଛି କୁକିଂ ଓଡିଆ କୁଜିନ୍ ମତେ ପଚରାଉଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା କେମିତି କରାହବ ବେସିକ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ କଣ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ କରିନି ମଣ୍ଡା ପିଠା ସବୁବେଳେ ତ ହୋଟେଲରୁ ଆଣି ଖାଏ ଏଇଆ ମତେ ଲେଖିବାର ଥିଲା ମତେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଲେଖିଦେଲି ମତେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନେଇବା ଭଲ ଲାଗେ ହେଲା ପଚାରିଦେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଏବେ ତାପରେ ମୁଁ ଭାବି ଭାବି କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଧଳା ଲାଗୁଥିବ ଏମିତି ତ ଲାଗୁଥିବ ଏମିତି ଏୟା ପଡିଥିବ ସେୟା ପଡିଥିବ ତ ଫଟକିନ ଧରଲେ ଇଏ ବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯିଏ କରିଛି ସେ ତ ଫଟକିନ କହିବେ କେମିତି ବନାବେ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ତ ବାପ ଏୟା ରହିବ ଆପଣ ମୁହିଁ କହିବେ ସାର୍ ବିକଜ ୟୁ ହାଭ୍ ଡନ୍ ଇଟ୍ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିବେ ସବୁ ଜିନିଷର ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଘୋଷା ଘୋଷିର କିଛି ଟେନସନ ହିଁ ରହିବନି ହଁ ଖାଲି ସେ ବେଶୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି କରିଦେଲେ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ବି ପଡେନି ସେକ୍ସନ ଗୁଡା ବହୁତ ଗୁଡେ ମନେ ରହିଯାଏ କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ଲେଭେଲର କମ୍ପିଟିସନ ହଉଛି ଓଜେଏସ୍ କରିକାରେ ଗୋଟେ ଲେଭେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ରୋଟ ମେମୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡିବ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦରକାର ପଡିବ ଓକେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା ନାଉ वी विल गो टू द कॉन्सेप्ट्स ओके ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ବ୍ୟାରାକ୍ ଆଣିକି ରଖିବେ ଏତିକି ଭିତରେ ଯଦି કોઈ ଡାଉଟ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ else we will go to the concepts which are given in our statutes ठीक ଅଛି both ଆମେ बैलेंस କରିକି पढ़िबा कोन इंडियन एविडेंस एक्ट को भी आउ भारतीय साक्ष्य अधिनियम को ठीक है सो टेक डाउन जदि आपण ऑनलाइन ये करछंती ताहले आपण दीटा जाकर बेयर एक्ट indiacode.nic.in सेउठू डाउनलोड कर दियो इंडिया कोड रो भलो जिंस कोन से जेतु गवर्नमेंट रो एडा तार जो एक्ट रो दि बेयर एक्ट रा ताको जो हमें कहू प्योर बेयर एक्ट की वर्जिन बेयर एक्ट माने कमेंट किछि नता खाली लॉ टा थिबो तेनु प्रिलिम्स ପାଇଁ ହେଲା କି କନସେप्ଟ ଟା କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ କରିପାରିବେ ସେଥିରେ ସେଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ बेसी सुविधा हम एज कंपेयर टू जो कि आपंकर कौन कमेंट्स कर बुझिपारे सो से दीटा जिनस डाउनलोड करके रखु से गुड़ा आप एक्सेस करेंगे जो मुझे कहूँ कि यहाँ सेक्शन 1 आर यहाँ सेक्शन ओके तो आम कंपेरिजन भी करवा सब सेक्शन में मुझे कहि देवी कि यही सेक्शन टा इंडियन एविडेंस एक्ट रे कौन थिला आउ एबे ओके एटा कौन अछि राइट सो फर्स्ट जिंस आमे जिबा आमे जो कहू फैक्ट फैक्ट कौन ये कौन से कौन बट बिफोर दैट सब लॉ जो हुए तार गोटे ऑब्जेक्टिव था कहीं से लॉ टा कराई व्हाई ओके दैट लॉ हैज बीन मेड ठीक है सो जदि आमे देखिबा दीटा जेको कंपेयर करिया प्रथमे इंडियन एविडेंस एक्ट को आसन फर्स्ट कम टू इंडियन एविडेंस एक्ट देन ताको मैच करिबा भारतीय साक्ष्य अधिनियम एटा हला इंडियन एविडेंस एक्ट रो पार्ट 1 चैप्टर 1 ओके प्रिलिमिनरी पार्ट 1 टा रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स टाइटल कौन देला एक्ट में भी कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हला एक्सटेंशन और तार स्कोप को जगह को एटा अप्लाई हबो तो आगुरु कौन थिला होल ऑफ इंडिया जो ब्रैकेट रे लिखी थी एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर लिखथिला बट आर्टिकल 370
डाइल्यूट हे गला परे आर्टिकल 370 अपन जदि भाबुଛନ୍ତି पूरा पळैछि सेटा कथा नो आर्टिकल 370 एबे भी अछि ओके बट कथाटा से बहुत डाइल्यूट हे जाइछि और किछि नाही बोली पावर अपन कहि पारि 35 ए भी से हेलो जा भी हो ठीक है तो एंटायर इंडिया को एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर थिला बट सेटा चेंज हे गला परे इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल रे भी एगुडा इंक्लूडेड रहइबो ता माने कोन कोर्ट मार्शल माने बुझ परछथि हमरो डिफेंस फोर्स जो माने अछन आर्मी नेवी एयर फोर्स ओके बुझि पारले तो ता ऊपर लागू होबो का ऊपर लागू होबनी एफिडेविट ऊपर लागू होबनी नॉट टू एफिडेविट presented to any court or office nor to proceedings before an arbitrator then arbitration proceedings रे भी एटा लागू होबो ओके एनी प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर ता ऊपर लागू होबो केबे कमेंट्स करछि एकटा फर्स्ट डे ऑफ सेप्टेम्बर 1 1872 ठीक है एटा हला हमें साइड बाय साइड देखिबा ठीक है एटा हला सेक्शन 1 तार एबे जदि मु जीबी आपनकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम को ओके बीएसआर बार एक देखो तो सेथरे आपण 1 को जानतो ओके गो टू सेक्शन 1 प्रथम कौन कहला एन एक्ट टू कंसोलिडेट एटा तारो इंटेंशन टा ऑब्जेक्टिव टा काहे कि एक्ट टा आपण आनिले तो जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर अ फेयर ट्रायल ओके तो एथरे भी सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट एटा देला ठीक अछि सो भारतीय साक्ष्य अधिनियम अलगा कोनोसी अल्टरनेटिव ना देलानी ता माने हिंदी रे ही अपन को कहयाटा हिंदी रु संस्कृत रु डिराइव भारतीय साक्ष्य अधिनियम ओके अदरवाइज जेंति तमिलनाडु हरिकारे तांकर एबे प्रोटेस्ट करछथि कि आपण भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 दबा कथा किंतु स्टैट्यूट रे सेंति किछि नाही सो आजिका दिन रे देयर इज नथिंग कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट एति कथा जदि जेबे हमर कमेंसमेंट हला भारतीय साक्ष्य अधिनियम रो ता आगु जो केस पे जुड़ा हिची सेगुडा इंडियन एविडेंस एक्ट हिसाब रे चलिबो हला सेम फुणी जिंस को हला it applies to all judicial proceedings in or before any court including court martials but are not to affidavits presented to any court or officer or to proceedings before an arbitrator exclusion ता देला सेटा एकई अछि सेम अछि कि करिया आउ सेठी को डेट ऑफ कमेंसमेंट ता क्लियरली लिखि देथिला 1 सेप्टेम्बर 1872 एठी किंतु देखंतु एठी 25 डिसेंबर 2023 रे एटा पास हैला ओके लॉ हे गला बट आसिला केते बेले कमेंसमेंट केते बेले हैला it shall come into force on such date as central government may by notification in the official gazette appoint okay को डेट ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देले एनीवन इफ यू नो यू कैन टेल मी भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएनएस और बीएनएसएस ए तीनटा केबेठू कमेंस कला 2024 डेट ता कोन जुलाई 1 सेटा निजे देखिबे देखि मते काली क्लास रो आरंभ रे कहबे हैला डेट ऑफ कमेंसमेंट एटा गोटे डिफरेंस देखिले सेठी हमर पूरा क्लियरली डेट लिखि देला
it shall come into force on first day of September 1872 कहीं आपनकर जे ब्रिटिश सरकार थिले से जा से आगु डिसाइड कर देले से हिसाब ताले आपण कहबे अच्छा ये तो डिसेंबर 25 रे एटा पास करेले 2023 रे आ ताको जुलाई 1 रे इंप्लीमेंट करिवार माने कोन आर वर्ष हाँ 5 मास 6 मास पर तो तार भित्तिभूमिटा टिके बनैबार थिला कोर्ट्स माने बुझिबे जुडिशियल ऑफिसर्स माने बुझिबे तेनु से टिके टाइम सेटा नै गला अदर इश्यूज आर आल्सो देयर किछि चेंजेस हो कोन हो प्रथम ड्राफ्ट जेतले आसिला गुडे एरर्स थिला टेक्निकल एरर्स ए जोटा हम देखुछु एटा सेकंड ड्राफ्ट फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम that was taken back by the government because there were lot of errors and lot of objections of different people ताकू ठीक ठाक करिकी पुनी सेकंड ड्राफ्ट हिसाब रे आनले से सेकंड ड्राफ्ट आज हमें पढुछु भारतीय साक्ष्य अधिनियम हिसाब क्लियर हैला सेक्शन 1 रो डिफरेंस टा शॉर्ट टाइटल ओके कमेंसमेंट ठीक है जी एंड एप्लीकेशन राइट बुझ पर आउ कोन डिफरेंस देखंतु आउ कोन कहि परिबे डिफरेंस सेठी देला पार्ट 1 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी एठी पार्ट 1 चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स परे आसे एटा आउ गोटे डिफरेंस अपन देखंतु ओके तो एमिति ही मु कॉन्सेप्ट को नहीं कि दीटा जाक कंपैरेटिवली एनालिसिस करिवे केतेटा कॉन्सेप्ट नुआ अछि जेमति केतला हमें पनिशमेंट पढिबा केते प्रकार रो पनिशमेंट आपनकर अछि ओके तो सेटा ऑब्वियसली बीएनएस कथा मु कहूची एठी भी लेट्स से फॉर एग्जांपल आपनकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओके डिजिटल रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डिजिटल एविडेंस इतरे बहुत गुडे डिफरेंस आसीबा हमर तो आम से डिफरेंशिएट करके पढ़ा तक ऑल आर क्लियर विथ सेक्शन 1 हैला एबे लेट्स गो टू सेक्शन 2 ओके किंबा आमे कहि परिबा ताकू दिस इज द इंटरप्रिटेशन सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट रे ताकू कहला इंटरप्रिटेशन क्लॉज ओके जो थरे कि बेसिकली से को करूची से बहुत गुडे जिंसर डेफिनेशंस दोच से बहुत गुडे जिंसर डेफिनेशंस दोच किंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम रे कोन कला ताको सीधा डेफिनेशन अंडर रे पके देला ठीक है एका जिंस किछिटा डेफिनेशन रे चेंजेस हेछि जोडा हम गोटे गोटे करी देखिबा ओके अधिनियम रे सेटा डेफिनेशन हिसाब रे नेला राइट सो जोटा ओरिजिनली सेक्शन 2 थिला इंडियन एविडेंस एक्ट रो सेटा आगुरु रिपील हे जाइछि ओके हमरो इंडिपेंडेंस आगुरु ब्रिटिश माने ही ताकू कर देथिले ठीक अछि सो जस्ट सी दिस सो 1 सरला एबे 2 को आसन तो एटा इंडियन एविडेंस एक्ट ऊपरटा मु इंडियन एविडेंस एक्ट रखुची तळटा भारतीय साक्ष्य अधिनियम रखुची हैला देखंतु ये कोन से दुईटा रिपील हे जाइछि हैला तो थर्ड रे एठी कुआ गला इंटरप्रिटेशन क्लॉज बहुत गुडे टर्म्स रो इंटरप्रिटेशन केमती करिवो भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट रे किंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम तेनु जोटा सेक्शन 3 रे इंडियन एविडेंस एक्ट रे अछि सेटा सेक्शन 2 रे भारतीय साक्ष्य अधिनियम रे अछि एज डेफिनेशंस ठीक है सो देखंतु एटा डेफिनेशन हैला एटा सेक्शन 2 रे कहला सो लेट्स सी कंपेयर करो इन दिस एक्ट the following words and expressions are used in the following senses unless a contrary intention appears from the context तार जो context रे यूज होची जदी कोनोसी
क्लियरली जणा पड़छि कि अलगा मीनिंग रे अलगा कॉन्टेक्स्ट रे यूज होछि ताले सेटा सेही कॉन्टेक्स्ट रे आपण धरिबे नहले ओके जहा दिया हिची एठी इंटरप्रिटेशन क्लॉज रे सेही कॉन्टेक्स्ट रे धरिबे सेम जिंसटा ये कोन करछि देखंतु इन दिस अधिनियम अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स ताको सिंपलीफाई कर दे कि जदि कॉन्टेक्स्ट रे क्लियरली आपण एका जिंस कहूछि कॉन्टेक्स्ट रे जानि परिबेनी ओके कि आ गोटे कोन हबा कथा ताले जहा लिखा हिची सेटा ही आपण बुझन राइट तो कोर्ट देखंतु सब प्राय सेम अछि ओके बट the type in which it has been arranged सेटा अलगा अलगा अछि फर्स्ट देखंतु इंडियन एविडेंस एक्ट court includes all judges and magistrates and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence जदि अपन देखिबे अधिनियम रे सेम जिंस courts includes all judges magistrates and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence ठीक अछि तो आर्बिट्रेटर रहिबे तेनु किए किए रहिले ताले जज रहिबे मैजिस्ट्रेट रहिबे आउ अन्य माने जांकू साक्षी नबार एविडेंस नबार पावर दिया हिच लीगली ऑथराइज जेमति गोटे कमिशन हम जानछन्ती कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी एक्ट गोटे अछि ठीक अछि सो कमिशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट सेतरे कोन जो कमिशन ऑफ इंक्वायरी हबो सेठी जे कमिशन रो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहिबे चेयरमैन ऑफ द कमिशन की जा रहिबे तांको साक्षी नबार पावर दिया हिच ताने सी भी कोर्ट रो डेफिनेशन रे जदि तांको साक्षी नबार पावर दिया हिची ताले सी भी यार डेफिनेशन रे आसी ओके आ पावर टे किए देथिबो से एक्ट रे थिबो लीगली ऑथराइज्ड सो इधर बाय द एक्ट ओके एनी फॉर्म ऑफ लॉ और बाय ऑर्डिनेंस जा भी लीगली ऑथराइज्ड हवा दरकार आर्बिट्रेटर माने कोन आर्बिट्रेटर माने जनरली कोन हुए आर्बिट्रेशन माने कोन जन दी जन भीतर झगड़ा हिच डिस्प्यूट गोटे हिच एटा को एगुडा सब आर्बिट्रेशन एगुडा सब हमें पढ़िबा जेतरा हमें एडीआर पढ़िबा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन माने जनकर संगे झगड़ा अछि ताको आपण केमती सॉल्व करिवे जनरली केमती सॉल्व हबो आपण जिबे कोर्ट रे सॉल्व करिवे कोर्ट रो एते टाइम नबो कोर्ट तले बाहर जदि हमें सॉल्व कर परिबा तो सेमती बहुत गुडे हमरो एडीआर गरिका मोड्स तार अछि ओके अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ता भितरु आर्बिट्रेशन गोटे आर्बिट्रेटर कोन से गोटे न्यूट्रल लोक जाको दी जण पार्टी एग्री करिवे ताको अपॉइंट करा हबो जेतेबेले दी जण पार्टी एग्री करिवे ताको सी जहा लास्ट रे फैसला दबो सी आउ पछमुचा दे परिवे यू हैव टू एग्री ओके तेनु आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स उडा आर्बिट्रेटर किए जे दी जण पक्ष को ओके तांकर जहा पॉइंट ऑफ व्यू अछि से चेष्टा करूची किंती दी जनकर सॉल्यूशन टा हे जो बट जदि सेटा न हे परला फाइनली से जहा कहबो दी जण पक्ष को मानिया पे पड़िबो हैला से हैला गोटे आर्बिट्रेटर मींस a person who is in charge of arbitration or who does arbitration is an arbitrator ठीक है इंटरनेशनल लेवल पे भी हुए जेमति कि आपण जानछन्ती इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान भितर इंडस रिवर को पानीटा किए अधिक नब किए केते नब किए कोन नब तो सेटा गोटे आर्बिट्रेशन है कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है कि डिसाइड हला तो आर्बिट्रेशन ता लोकल लेवल रे पारे आउ ता पई स्वतंत्र लॉ अछि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट अछि ओके सो बुझी पाले तो आर्बिट्रेशन माने कोन माने एटा आप कोर्ट को जाउ नांती कोर्ट को न जाई कि आउट ऑफ कोर्ट गोटे टाइप रो आपण सेटलमेंट करिया पे चाहते एटी जल्दी ही जिवो किंतु प्रॉब्लम हैला आर्बिट्रेटर जदि आपण को अगेंस्ट कोन कहला फैसलाटा आपण को अगेंस्ट कला ताहले जनरली कोन आपण तो एक्सेप्ट करिया पड़े सेटा प्रथम रो आपण कमिट करथे ठीक अछि आज्ञा तो से हैला आर्बिट्रेटर बुझी पाले आज्ञा मनर पड़ला तापरे कनक्लूसिव प्रूव्ड डिस्प्रूव्ड ए सब जिंस गुडा इंटरप्रिटेशन क्लॉज रे ये परे देछि के इंडियन एविडेंस एक्ट किंतु डेफिनेशन अंडर रे ताकू ओके सबसेक्शन 1 अंडर रे क्लॉज एबीसी कर देकी भारतीय साक्ष्य अधिनियम सब गुडा सेठी दे देछि सबसेक्शन 1 रे सेक्शन 2 सबसेक्शन 1
सेटा गोटे आउ गोटे डिफरेंस तेणु कोर्ट रो डेफिनेशन टा जानी परले तेणु जदि गोटे प्रिलिम्स रे क्वेश्चन पड़ला आंको भितरु किए कोर्ट रो डेफिनेशन रे जिबेन ओके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सिविल जज ओके प्रेसिडेंट ऑफ एन इंक्वायरी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी और इंक्वायरी कमिशन आउ लास्ट रे आर्बिट्रेटर तो आंसर हबो आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेटर ओके सीए आपण को कोर्ट रो डेफिनेशन रे ताको आपण इंक्लूड करिवे नहीं बुझी पाले सो फाइन एतिकी हमर आज पे रहला काली हमें एउठु पुनी कंटिन्यू करिवे जोटा हमें फैक्ट देखु व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट ओके स्टैट्यूटरी डेफिनेशन कौन स्टैट्यूटरी डेफिनेशन माने जो डेफिनेशन तो स्टैट्यूट रे देखिए एगुडा जा लिखा है इंडियन एविडेंस एक्ट रे फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स जा जा आगु कोनते स्टैट्यूटरी डेफिनेशन हमें जनरल डेफिनेशन भी देखियो जनरली मु बुझिया पई फैक्ट माने कौन ओके दैट वी विल सी एंड देन डेफिनेशन टा गोटे क्लास लागियो काली केवल हमें डेफिनेशन सारिबा काना एतरे बहुत गुडे डेफिनेशन अछि बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट अछि मे बी न सरी पारे गोटे क्लास है बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट एतरे दिया है जेटा बुझिया पे हमको भी समय लागिवो तार टिके एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हमें लिखिबा ओके बुझी पाले तो एनी डाउट्स व्हाट यू हैव स्टडीड टुडे हमें प्रथमे देखिलु फंक्शंस ऑफ एविडेंस लॉ तापरे हमें स्टार्ट कलु सेक्शन वाइज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंटायर कोर्स में मुझे ही करी हमें गोटे कौन जमी फैक्ट टा काली हमें आरंभ कर फैक्ट फैक्ट कौन ता डेफिनेशन कौन ता कैरेक्टरिस्टिक कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम कौन कहला इंडियन एविडेंस एक्ट कौन कहला किछि डिफरेंस अछि कि जैसे कहउछन जो जगह रे डिफरेंस अछि सेठी मु आपनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करी ठीक अछि तो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट रो डेफिनेशन रे कहउछ है डिजिटल रिकॉर्ड भी डॉक्यूमेंट रो अंडर रे आसी हैला भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्लियरली कहउछ आ से डिजिटल रिकॉर्ड सुडा से गुडा प्राइमरी एविडेंस हिसाब रे ओके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स वरिका डिजिटल डॉक्यूमेंट्स सुडा प्राइमरी एविडेंस हिसाब रे से धरुची भारतीय साक्ष्य अधिनियम वेरएस इंडियन एविडेंस एक्ट ताको जनरली सेकेंडरी एविडेंस हिसाब रे धरतला जो जगह रे डिफरेंस आसीबो सेटा आउटिके भलरे डिस्कस करिया प्राइमरी एविडेंस कोन सेकेंडरी एविडेंस कोन एडा तो बेसिक टाइप्स ऑफ एविडेंस हमें ऑलरेडी कर सकते कुछ पहले तो विल स्टॉप हियर anything any doubts you have then you can ask tomorrow we'll start with the definition of fact fact kono both working definition and statutory definition